So very good afternoon everyone. We are discussing about Unit 1, B.pharm 5th semester Pharmacology, drugs acting on cardiovascular systems. Drugs acting on cardiovascular system. So drugs acting on cardiovascular systems, we are discussing about ionotropic drugs. Ionotropic drugs. Ionotropic drugs. So ionotropic drugs are those drugs which increase the force of contraction of the ventricles. What are ionotropic drugs? Ionotropics are those drugs which increase the force of contractions of the ventricles. Which increase the force of contraction of the ventricle. These type of drugs we call ionotropic drugs. So under ionotropic drugs, we are discussing about digoxin. Another classes of the drug under this ionotropic drugs which increase the force of contraction of the ventricles are sympathomimetic drugs. Sympathomimetic drugs. So these are the drugs which mimics the sympathetic systems. The word mimetics is there and there is a sympatho. So the drugs which mimics the sympathetic systems we call sympathomimetic drugs. So these are the other classes of the drugs which increase the force of the contraction of the ventricles and we call it ionotropic drugs. Another classes of the drug is phosphodiesterase inhibitors, that we call PDE. Phosphodiesterase inhibitors and particularly phosphodiesterase 3 inhibitors. So phosphodiesterase 3 inhibitors also increase the force of contractions of the ventricles, and in CHF force of contraction of the ventricle is decreased. Your ventricles are not contracting properly. So these are the drugs, ionotropic drugs. Ionotropic are those drugs which increase the force of contraction of the ventricle. आइनोट्रॉपिक वो दवाइयाँ हैं जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, आपका वेंट्रिकल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केसेस में यू कैन गिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स. सो व्हाट आर दी आइनोट्रॉपिक ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल? उसमें एग्जाम्पल है, वन ऑफ द वेल नोन ड्रग इज डिगॉक्सिन. दूसरी ड्रग्स हैं क्लासेस सिम्पैथोमाइमेटिक मीन्स उसको मिमिक्स करना, उसी तरह का एक्टिवेशंस करना. So it's activate the sympathetic system. So these are the drugs which mimics the sympathetic systems. So these drugs also increase the force of contractions of the ventricles. Another one is phosphodiesterase inhibitors. So one by one we are going to discuss. Digoxin we have already covered in earlier video. How the digoxin, what is the mechanism of action of the digoxin, right? So now we are going to discuss about little bit much more detail about digoxin. Digoxin is a well-known drug which increase the force of contraction of the ventricle. What problem with digoxin is it's not a safe drug. I already told this is not the first line drug or first of choice drug. The reason is because of its safety concern, because this drug belongs to narrow therapeutic index. So this drug belong to category of narrow therapeutic index. Narrow therapeutic index, I already told, there are every drugs, there is a minimum effective concentrations and there is a maximum safe concentrations. So minimum effective concentration means that much minimum concentration of the drug is required to produce the effect. That we call minimum effective concentration, as its name indicates, minimum effective concentrations. So this digoxin belongs to narrow therapeutic index drug. Narrow therapeutic index means there is a minimum effective concentrations and there is a maximum safe concentration for each and every drug. So what is a minimum effective concentration? Minimum effective concentration means minimum concentration which is required
to produce the effect of the drug. That concentration we call minimum effective concentration of that particular drug. And maximum safe concentration means the drugs, if drug goes beyond the maximum safe concentration, it will produce a toxic effect. So the drugs has to be in this range. It should not, if drug is concentration is below the minimum effective concentration, suppose your concentration of the drug reach up to this point, not cross the minimum effective concentration or not reach to minimum effective concentrations, you will not get the effect. If one drug is crossing the minimum effective concentrations but crosses the maximum safe concentration, so it will produce the toxic effect, right. So this, the window which is between minimum effective concentrations and maximum safe concentrations, we call it therapeutic window or therapeutic index. So the drugs which belong with narrow therapeutic index, in that drugs, the one of the example is digoxin. Digoxin belongs to narrow therapeutic index. So in these drugs we have to be very careful, because if little bit concentration is decreased, you will not get the effect. If little bit concentration fluctuate in the blood, it will cross the maximum safe concentration and produce the toxic effect. That is why the drugs which belongs to narrow therapeutic index, we have to do the TDM, that is we call therapeutic drug monitoring. So that we have already discussed as well. So digoxin belongs to this. So uses of digoxin, mechanism we have already discussed, how it increase the force of contractions. When we talk about uses of digoxins, it is very good drug for the left ventricular failure. Left ventricular failure, when your left ventricle is unable to contract properly, in that case it will increase the force of contraction of the ventricles. And particularly this is the drug of choice or drug very useful for left ventricular failure with atrial fibrillations. Atrial fibrillations. Atrial fibrillations. So if patient is suffering from left ventricular failure with atrial fibrillations, digoxin is very good drug. Why? How it's very good drug for the patients having left ventricular failure with atrial fibrillation? The reason is, see, left ventricular failure, you know how digoxin helpful in the left ventricular failure. Digoxin will block sodium potassium ATPases, your sodium will not enter, your sodium calcium exchanger will be affect, your calcium concentration will increase inside the cells, it will stimulate your smooth endoplasmic reticulum, more calcium will be released, it will bind with the calmodulin, and actin and myosin filaments will be interact and do the contraction of the ventricles. That is the left ventricular failure. How digoxin is helpful for the left ventricular failure, but how it helpful in the atrial fibrillations? So to understand this, digoxins have two types of effect, direct effect and indirect effect. Direct effect is this one, it blocking the sodium potassium ATPases, increasing the force of contraction of the ventricle. That is the direct effect of digoxins. But when we talk about indirect effect of digoxins, so indirect effect of digoxin is, it activate our vagus nerve. So it's a vagotonic drugs. Vagotonic nerves. It stimulate our vagus nerve. That is the indirect effect of digoxin drug. So if vagus nerve is stimulated in our body, so what will happen? Your acetylcholine will release, that is the major neurotransmitter in the parasympathetic systems. So acetylcholine will release. So we are talking about the heart. So acetylcholine have a receptors all over the body, and receptors are muscarinic and nicotinic all over the body. Receptors are muscarinic and nicotinic. So we are talking about the heart. On the heart, acetylcholine have a receptors M2. M2 receptors are on the heart. When acetylcholine release on the heart, there are M2 receptors, and M2 receptor belongs to GPCR. So there are various category of receptors like ligand gated ion channel receptors are there, enzyme linked kinase receptor are there, nuclear receptor are there, GPCR are there. So M2 receptor belongs to GPCR, and GPCR it's going to activate GI form of the G protein, GI, and GI is inhibitory in nature. I stands for inhibitions.
So it's a inhibitory in nature. It inhibits the adenine cyclase, and there is a less formations of CMP. So CMP level is going to decrease. If CMP is going to decrease, your phosphokinases is not going to activate, your phosphorylation of calcium channel will not happen, and ultimately your heart will be slowed down. So heart will be slowed down when indirect action of digoxin is, it activate your vagus nerve. If vagus nerve is stimulated in our bodies, acetylcholine will be released. Acetylcholine, if we talk about heart, have a receptors M2 on the heart. M2 receptor belongs to GPCR. In GPCR, when when acetylcholine bind with the M2 receptors, then what will happen? It going to activate GI. GI is a inhibitory protein. So it inhibits the phosphorylations of ATP into CMP. So CMP level is going to decrease. Decrease in CMP will result in relaxation, right? It's going to decrease your heart rate as well. So that is your indirect actions of your digitalis, indirect actions. So now you have to understand, we are talking about how this drug is useful for the patient having left ventricular failure with atrial fibrillations. So when we talk about heart, so see indirect actions of digoxin. I am talking about first indirect. Direct action is what? Direct action we already discussed. There is a so sodium potassium ATPase, it will block it and increase the calcium loading and increase the force of contraction of the ventricles. Direct action is here. Digoxin's direct action is in the left ventricle. It will act and inhibit the sodium potassium ATPase bump and increase the calcium concentrations and increase the force of contraction of the ventricles, because actin and myosin filaments will be interact with each other. That is the direct action. Indirect action, as I said, it's going to activate your vagus nerve, and whenever vagus nerve is stimulated in the bodies, there is a release of acetylcholine, which is the major neurotransmitters of parasympathetic system. Released acetylcholine have a receptors on the heart, but not all over the heart. Like we have discussed about the beta 1 receptors are present all over the heart for the sympathetic system, but for acetylcholine there is a receptor on the heart, but particular part of the heart. Here SA node, and this is your AV node, right? So here are your M2 receptors, M2 muscarinic receptors, and particularly M2. And M2 receptors belongs to GPCR, and when acetylcholine act on the M2 receptors, it's going to activate your GI isoform of the G protein, and GI is inhibitory in nature. GI is going to decrease the CMP level. Decrease CMP level is going to slow down. So what will happen when your SA nodes will be slowed down? It will result in sinus bradycardia. Bradycardia means decrease in heart rate. Sinus bradycardia, right? And how digoxin is producing sinus bradycardia? By activations of vagus nerve. And how vagus nerve result in sinus bradycardia? Because vagus nerve result in the release of chemical. That chemical is acetylcholine. Acetylcholine have a receptor on the SA node, that is the M2 receptors. M2 receptors is GPCR, and when acetylcholine act on the extracellular domain of M2 receptors, it going to inhibit the G protein, and it result in decrease in CMP, and decrease in CMP will result in sinus bradycardia. That is the one. Another is because M2 receptor is here as well, so it's going to decrease the conductions, which is going to from SA node to AV node, and it can result in AV nodal block as well. AV nodal block. If your if you are not maintaining the therapeutic concentration of digitalis, or when you are going to digitalize the patients, so in that case you have to be very careful, otherwise digoxin can result in sinus bradycardia and AV nodal block, and these are the mechanisms are happening due to indirect action of digitalis. And due to direct actions will result in atria there are a, with direct actions there is a sodium potassium ATPases are there. So in direct actions you will get the effect atrial
tachycardia, and ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia. So now you can see that one drug is doing two types of actions. टैकीकार्डिया भी कर रही है और ब्रैडीकार्डिया भी कर रही है. हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज डायरेक्ट एक्शन जब हो रहा है डिगॉक्सिन का हार्ट पे, तो कैसे हो रहा है? डायरेक्ट एक्शन डिगॉक्सिन का क्या है? वो सोडियम पोटासियम एटीपेज को ब्लॉक कर रहा है. 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटासियम अंदर, तो सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है. उसकी वजह से आपका सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर भी अफेक्ट हो रहा है. कैल्शियम बाहर नहीं जा पा रहा है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रही है, तो कैल्शियम आपका ट्रोपोमाइसिन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कैल्शियम रिलीज हो रहा है. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं. दैट इज द डायरेक्ट एक्शन. So direct actions will result in ventricular tachycardia. It will increase, right? It will increase the cardiac output. It will increase the tachycardia, ventricular tachycardia. And same, these are also calcium are also loading happen here as well in the atria. So it result in atrial tachycardia. But same drug is doing bradycardia as well. How it's doing the bradycardia? Because indirect action of digoxin is stimulation of vagus nerve. And when vagus nerve is stimulated, acetylcholine is released. Acetylcholine is released. On the heart, there are a M2 receptor. M2 receptor GPCR, but it's a inhibitory. So your decrease in CMP, it will result in sinus bradycardia. M2 receptor are also on AV node. It will result in AV nodal block. So same drug is doing two different effects. Tachycardia भी कर रही है और bradycardia भी. How कैसे कर रही है? That's I already explained कि how this digoxin is doing sinus bradycardia and atrial tachycardia and AV nodal block. Right? These are indirect actions. Due to these actions, this drug is useful for left ventricular failure with atrial fibrillations. So due to these mechanisms, this drug is useful in left ventricular failure with atrial fibrillations. So first you have to understand what is atrial fibrillations and why digoxin is very useful drug when the patient have a left ventricular failure with atrial fibrillations. So atrial fibrillations, what happens in the atrial fibrillation is, here in the atria the electrical activity is become too fast. Electrical activity, I am talking about electrical activity, not the heart rate. Electrical activity in the atria, when it becomes more than 350 per minute, so that conditions be called atrial fibrillations, and this atrial fibrillations can result in mechanical failure of the atrium as well, right? So now you know that atria ventricular filling is mainly dependent on passive filling, means ventricle filling is done by the passively rather than active. Atria is responsible for only approximately 20% of the ventricular filling, right? 20% of ventricular filling atria is responsible, remaining filling is done by passively, right? So now if the patients have very large electrical activities in the atria, that is 350 per minute, so you know, if this electrical activities goes down to the ventricles, it going to result in ventricular failure as well. And if ventricular failure will happens, so you know that is more serious conditions, right? So now you want something or some kind of drugs which will prevent this electrical activities moving from atrium to ventricles. And I told you digoxin, what digoxin is doing by the indirect actions. What it's doing, it's going to act here and going to block AV node by indirect actions, by activations of your vagal tone, right? So now in the patients who is suffering from left ventricular failure with atrial fibrillations, you want such kind of medicines so that these electrical activities, abnormal electrical activities should not move to the ventricle. If it moves to the ventricles, damage will happen much more. Otherwise heart will manage because only 20% filling is done by the atrium. So you want such kind of drug that these electrical activity if moving should not move to the ventricles. So digoxin is doing that work.
Digoxin, due to its indirect actions, they are resulting to block of the SA node. They are blocking your AV node as well. So if your AV node it slow down, so it will not much more affect the ventricles. It will affect little bit, but not much more. So that's why this digoxin is a useful drug with left ventricular failure with atrial fibrillations. Again I am explaining कि डिगॉक्सिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए क्यों अच्छी दवाई है. द रीजन इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए तो है ही डिगॉक्सिन. इफ अदर ड्रग्स आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट एबल टू मैनेज द पेशेंट्स विद डायरेटिक्स, यू नो ACE इनहिबिटर, ARB blockers you have tried but you are unable to manage. So in that case you can use this digoxins, but you have to use digoxin very carefully because it belongs to narrow therapeutic index. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में कैसे हेल्प करती है डिगॉक्सिन, उसका मैकेनिज्म हमने पढ़ चुके हैं. वैसे क्विकली अगर मैं बताऊं तो वो क्या कर रही थी आपकी, डिगॉक्सिन का अगर मैकेनिज्म क्विकली देखोगे तो पहले तो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हार्ट की थी कि सोडियम बाहर से अंदर आएगा जब भी कोई स्टिमुलस आया, ये पहला स्टेप था. फिर आपके थ्रेशोल्ड पे पहुंचा तो वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम भी अंदर आ गया बाहर से. ये कैल्शियम यहाँ पे आपके सेल्स के अंदर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये इंटरनल स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है. ये कैल्शियम ट्रिगर और कैल्शियम रिलीज करवाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. देयर इज ए कैल्शियम एटीपेजेस आर देयर. ये कैल्शियम इंटरेक्ट करेगा एक प्रोटीन के साथ, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमाइसिन. ट्रोपोमाइसिन जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोमाइसिन के साथ तो आपके एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट्स इंटरेक्ट करेंगे आपस में, इंटरेक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे. This is the mechanism of this is the normal physiology how ventricles are contracting. Now I told you जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अपने रेस्टिंग स्टेज पे भी जाना है वापस वेंट्रिकल को. ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, वो रिलैक्स भी करेगा. तो रिलैक्स कैसे करेगा, रिलैक्स तब करेगा जब ये जो कैल्शियम आयन है दोबारा, ये जो यहाँ के कैल्शियम आयन है एक्सेस, ये दोबारा स्टोर हो जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एक्सेस में रहेंगे. जो यहाँ पे कैल्शियम एक्सेस में आया वो बाहर जाएगा एक पंप की हेल्प से. एक एक्सचेंजर लगा हुआ है जो कैल्शियम को बाहर लेके जाता है और सोडियम को अंदर ले आएगा. दिस इज एक्सचेंजर वी कॉल्ड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. तो आपका कैल्शियम तो बाहर चला गया, कैल्शियम यहाँ से बाहर चला गया, जो यहाँ थोड़ा बहुत एक्सेस था वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो गया. बट अब क्या कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है सेल्स के अंदर, सोडियम. सोडियम यहाँ भी है, सोडियम यहाँ भी आया है. अब सोडियम को भी बाहर भेजना पड़ेगा. तो सोडियम को बाहर भेजने के लिए यहाँ पे आपका एक पंप है जिसके थ्रू 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटासियम अंदर आते हैं. क्योंकि नॉर्मली सेल्स के अंदर आपका पोटासियम ज़्यादा है और सोडियम बाहर ज़्यादा है. ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है. कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा है, रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम को बाहर इफ्लक्स कर दे रहा है और सोडियम को भी बाहर इफ्लक्स कर रहा है, पोटासियम को अंदर लेके आ रहा है. दैट इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल. नॉर्मली आपके सेल्स के अंदर पोटासियम ज़्यादा है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है. दिस इज नॉर्मल. तो डिगॉक्सिन एक दवाई है जो क्या करती है, आपके इसको ब्लॉक कर दे रही है, इस पंप को. सोडियम पोटासियम एटीपेज को ब्लॉक कर दे रही है. तो क्या होगा, 3 सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे, सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई. सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई तो ये पंप भी काम नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि सोडियम अंदर बढ़ चुका है तो बाहर से अंदर नहीं आएगा और कैल्शियम जो है वो अंदर से बाहर नहीं जा रहा है. तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन, सो हाउ सोडियम इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल इनसाइड, क्योंकि कैल्शियम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस. तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो यही सारे मैकेनिज्म के थ्रू आपकी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की बढ़ जाएगी. राइट. सो दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड दिस वन. तो दैट्स व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में तो डायरेक्ट एक्शन के थ्रू डिगॉक्सिन इज हेल्पफुल कि किस तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में किस तरह वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है. दूसरी बात आई एट्रियल फिब्रिलेशंस. एट्रियल फिब्रिलेशंस वो कंडीशंस है जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट्रिया की, एट्रियल फिब्रिलेशन इट इज नॉट वेंट्रिकल, एट्रियल. तो एट्रियल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. 350 पर मिनट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है. तो उससे क्या होगा, एट्रिया सही से काम नहीं करेगा, इट रिजल्ट इन मैकेनिकल फेलियर एज वेल. बट अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नीचे चली जाए वेंट्रिकल में
तो वेंट्रिकल्स को पूरी तरह, वेंट्रिकल इज द मेन आपका ब्लड को पंप कर रहा है, तो वेंट्रिकल्स आपका फेल हो जाएगा। बल्कि वेंट्रिकल की जो फिलिंग है एट्रियल इज डूइंग 20% फिलिंग जो है वेंट्रिकल की वो एट्रिया से होती है। अब फॉर एग्जांपल 20% नहीं हो पा रही है क्योंकि इसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, फिर भी आपका हार्ट मैनेज कर लेगा क्योंकि 20% 80% पैसिवली फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की, 20% अगर उसको नहीं भी मिलेगा तब भी वो समहाउ इट विल बी मैनेज। बट अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 350 पर मिनट सारा आपका यहाँ पे वेंट्रिकल में भी चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, वेंट्रिकुलर मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, देन इट विल बी मोर सीरियस सिचुएशंस। तो इस केस में आपकी डिगॉक्सिन इज ए बेस्ट ड्रग। रीजन इज बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशंस में आप चाह रहे हो कि ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे ना जाए। और इनडायरेक्ट एक्शन डिगॉक्सिन का क्या था, वो आपके वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहा था, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था, इसको स्लो डाउन कर रहा है, साइनस ब्रेडिकार्डिया कर रहा है एंड एवी नोडल ब्लॉक। तो एवी नोडल ब्लॉक हो रहा है तो ये नीचे एक्टिविटीज मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो उतनी ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होगी, तो इट विल बी हेल्पफुल। सो दैट इज द मैकेनिज्म हाउ डिगॉक्सिन इज हेल्पफुल इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर्स विद एट्रियल fibrillations, right? This is about the left ventricular failure. Now next is digoxins. If we talk about adverse effects of these digoxins, adverse drug reactions of the digoxins. So if you are doing the digoxins or you are digitalize the patients much more, then what will happen? क्या हो सकता है? अगर indirect action ज़्यादा बढ़ा तो क्या होगा? साइनस ब्रेडिकार्डिया बढ़ जाएगा, साइनस ब्रेडिकार्डिया, वही आपके एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएंगे। देन एवी नोडल ब्लॉक, एवी नोड्स को ब्लॉक कर सकता है, देयर इज ए प्राइमरी ब्लॉक, सेकेंडरी ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक। देन इट विल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन साइनस टैकीकार्डिया, जो उसके इफेक्ट थे वही आपके एडवर्स इफेक्ट मतलब वही बढ़ जाएंगे, साइनस टैकीकार्डिया एंड ventricular tachycardia if you are not maintaining the dose. These are the adverse effect. Another adverse effect apart from that, nausea. Nausea means कि उल्टी करने की सेंसेशन आएगी कि बस उल्टी होने वाली है। Then vomiting, vomiting मतलब उल्टी हो ही गई, nausea, vomit. Adverse effect of डिगॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? साइनस ब्रेडिकार्डिया जो इनडायरेक्ट एक्शन थे वेगस नर्व से, एवी नोडल ब्लॉक, साइनस टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, नोजिया, वोमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सो एज अगेन आई एम टेलिंग दिस इज द ड्रग विद नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, सो यू हैव टू बी डिजिटलाइज द पेशेंट्स वेरी केयरफुली। सो अगर डिजिटलाइज करना है आपको पेशेंट्स तो व्हाट यू हैव टू बी टेक केयर, यू हैव टू चेक इट्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल। If patient is hypokalemic, digitalis can produce the toxicity. So अगर पेशेंट्स को हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटासियम का लेवल कम है, डिक्रीज इन पोटासियम लेवल्स, एंड इट कैन अब्जॉर्ब, यू कैन अब्जॉर्ब इन द पेशेंट्स हु इज सफरिंग फ्रॉम CHF, उसका पोटासियम का लेवल कम हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। क्यों? क्योंकि उन पेशेंट्स को आप डायरेटिक्स दे रहे हो। डायरेटिक्स जब देते हो तो पोटासियम जो है वो बॉडी से निकलता है। मेनली जब आप डायरेटिक्स यूज़ करते हो, थायाजाइड डायरेटिक्स, थायाजाइड्स एंड लूप डायरेटिक्स, मेनली इफ़ यू आर गिविंग दीज डायरेटिक्स और पेशेंट इज यूजिंग दीज डायरेटिक्स, तो हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि पोटासियम को ये बॉडी से बाहर निकालते हैं, थायाजाइड एंड लूप डायरेटिक्स। दैट्स वाई देर आर अनदर क्लास ऑफ डायरेटिक दैट वी कॉल्ड पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. So these are the diuretics which will retain the potassium. So if you are going to digitalize the patient, सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करोगे। अब पोटासियम कम है तो आप देखोगे क्या रीज़न है पोटासियम कम होने का, क्या उसको ये डायरेटिक्स तो नहीं दे रहे हो थायराइड और लूप, तो उसका डायरेटिक्स चेंज करोगे। यू हैव टू बी रिप्लेस इट विद द पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, राइट। तो चांसेस हैं, तो इट विल रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी इफ पोटासियम लेवल इज डिक्रीज और आपने डिजिटलाइज कर दिया पेशेंट्स को। नेक्स्ट इज अनदर इलेक्ट्रोलाइट विच कुड रिजल्ट इन toxicity is hypomagnesia. Hypomagnesia, अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशंस कम है पेशेंट्स की, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशंस कम है मैग्नीशियम आयंस की,
that can also result in toxicity, digitalis toxicity, right? So मैग्नीशियम लॉस पेशेंट्स में हो सकता है जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो, क्योंकि वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग के थ्रू आपके मैग्नीशियम आयंस कम हो सकते हैं बॉडी में. सो यू हैव टू बी चेक द मैग्नीशियम लेवल एज वेल. अनदर आयन विच यू हैव टू बी चेक इज कैल्शियम लेवल. सो कैल्शियम अगर इंक्रीज हुआ है, if the patient's calcium level is increased, hypercalcemia, तो that can increase the chances of digitalis toxicity. क्यों? क्योंकि digitalis खुद कैसे काम कर रहा है, कैल्शियम लोड कर रहा है, आपका ऑलरेडी कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया है पेशेंट्स, तो इट कुड प्रेसिपिटेट द डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. तो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम पेशेंट्स को डिजिटालिस दे रहे होते हैं, बिफोर दैट वी हैव टू चेक द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, कि उसका पोटेशियम लेवल कम है तो हम नहीं कर सकते, मैग्नीशियम लेवल कम है तो हमें फिर मैग्नीशियम को करेक्ट करना पड़ेगा. अगर कैल्शियम ज़्यादा है देन इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो उसका भी आप मेजर करोगे. सो फर्स्ट वन, वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, राइट? सो दीज वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर डिजिटलाइज द पेशेंट्स, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स वी हैव टू बी measured. Then another thing with respect to these digitalis is, if there is a digitalis toxicity happens, then how to manage it? So to manage the digitalis toxicity we are talking about, digitalis toxicity can happen if the patient is hypokalemic, if the patient is hypomagnesia, if patient have a hypercalcemia. So all these electrolyte level we have to be measured before digitalize the patients. अगर उसका पोटेशियम लेवल कम है, so we have to be increase the potassium level. If magnesium level is decreased, we have to increase. If calcium level is increased, we have to decrease it. We have to make it in the normal limit. So if someone have a digitalis toxicity can also happen when you are using the sympathomimetic drugs. So sympathomimetic drugs like dopamine, dobutamine, these are also the calcium loader. So if you are using sympathomimetic drugs with digitalis, so you have to be careful, you have to check, there is a chances of toxicities, so you have to cross check that part. And if toxicity is there, so there is an antibody DG bind. So DG bind is a antibodies against digitalis. So if someone have a toxicities, so to reduce the toxicities we can use the antibody, that is the DG bind. So DG bind can be useful for the management of the toxicities of digitalis. So this is about the digitalis. So we have discussed so far. If I talk about particularly, we are talking about the ionotropic drugs. What are the ionotropic drugs? जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है वेंट्रिकल की, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उसमें आती हैं आपकी डिगॉक्सिन्स, sympathomimetic drugs and phosphodiesterase inhibitor, 3 inhibitors. So we have completed this digoxin in detail. So we have discussed about how digoxins increase the force of contractions. We have already discussed in earlier video as well. So digoxins uses is, we have to use digoxin very carefully. It's a good drug, very nice drug, पर हमें बहुत ध्यान से यूज़ करनी होती है. क्यों? क्योंकि डिगॉक्सिन्स फॉल करती है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स. जितनी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्यों केयरफुल रहना है? क्योंकि इनकी अगर थोड़ी सी कंसनट्रेशन कम हो गई या थोड़ी सी कंसनट्रेशन बढ़ गई, इट विल डू द वर्स. हाउ इट विल डू द वर्स? अगर मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन तक आपकी कंसनट्रेशन बढ़ी नहीं तो इफेक्ट नहीं आएगा. ये विंडो बहुत नैरो है तो देयर इज ए चांसेस कि आपकी कंसनट्रेशन ड्रग की ऊपर चली जाए मैक्सिमम सेफ कंसनट्रेशन से और टॉक्सिसिटी हो जाए. यूजेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हम यूज़ करते हैं, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन. सो दैट वी हैव डिस्कस व्हाई डिगॉक्सिन इज यूजफुल ड्रग फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन. क्योंकि डिगॉक्सिन का डायरेक्ट एक्शन से यू कैन अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट एक्शन जो है डिगॉक्सिन का, उससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी वेंट्रिकल के, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए यूजफुल है. बट हाउ इट इज यूजफुल फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन? टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज डिगॉक्सिन का इनडायरेक्ट एक्शन भी है. इनडायरेक्ट एक्शन क्या है? इट गोइंग टू एक्टिवेट योर वेगस नर्व. वेगस नर्व जब एक्टिवेट होती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है. एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा हार्ट पे, M2 रिसेप्टर पे. M2 रिसेप्टर GPCR रिसेप्टर हैं जो कि GI हैं, इनहिबिटरी इन नेचर, इनहिबिटर हैं. इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन CMP. डिक्रीज होगा CMP का तो आपका ब्रेडिकार्डिया होगा. सो M2 रिसेप्टर आर ऑन द साइनस, सो इट विल रिजल्ट इन साइनस ब्रेडिकार्डिया. AV नोड पे है, AV नोडल ब्लॉक. So why it's useful? So same drug, it's the beauty of this drug is
एक ही ड्रग आपकी टैकीकार्डिया भी कर रही है और ब्रैडीकार्डिया भी कर रही है। टैकीकार्डिया कैसे कर रही है? डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और इनडायरेक्ट एक्शन के थ्रू जो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देती है उसकी वजह से साइनस ब्रैडीकार्डिया और एवी नोडल ब्लॉक। और इन्हीं एक्शन की वजह से दिस इज द ड्रग यूजफुल फॉर द योर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन वो है जिसमें आपका 350 पर मिनट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उससे ज़्यादा हो रही है, तो आप चाहते हो कि ये नीचे तक ना जाए, तो आप चाहते हो ऐसी दवाई जो इसको ब्लॉक करे। सो डिगॉक्सिन इज यूजफुल फॉर दैट, राइट? वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल. Then we have discussed about this is the mechanism of digoxin, how digoxin increase the left ventricular force of contractions. Then we have discussed about adverse drug reactions, right? Then we have discussed about we have to be very careful when we are using the digoxin, when we are digitalizing the patients, उसका potassium level, magnesium level, calcium level ये सब हमें check करना है. Then we have to be digitalized, otherwise it could result in toxicities. So next ionotropic drug is, sympathomimetic drugs, right? So ionotropic drugs में हमने डिगॉक्सिन कंप्लीट कर लिया. दूसरी जो कैटेगरी है ionotropic ड्रग में जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सकती हैं, दीज आर द ड्रग्स आर sympathomimetic ड्रग्स. sympathomimetic ड्रग्स, तो जैसे मैंने पहले बोला माइमेटिक, ये क्या करेंगे? सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक्स करेंगे. तो ड्रग्स इन दिस वन इज डोपामिन एंड डोब्यूटामिन. डोपामिन एंड डोब्यूटामिन. डोब्यूटामिन. So dopamine and dobutamine is a sympathetic drugs which is useful in the congestive heart failures as a ionotropic agents. It will increase the force of contraction of the ventricle. So now mechanism of action, how sympathomimetic drugs like dopamine and dobutamine increase the force of contraction of ventricles. So that we are going to discuss. So we are discussing about drugs acting on cardiovascular system. Drugs acting on cardiovascular system. And under drugs acting on cardiovascular systems, we have already covered ionotropic agents. Ionotropic agents or ionotropic drugs. These are the drugs which increase the force of contractions of the ventricles and helpful in the congestive heart failure. So we have already covered the digoxins in an earlier video, how digoxin work, how it blocks the sodium potassium ATPase, and how blocking of sodium potassium ATPase, how increased sodium level increase the calcium levels, and how calcium increase the force of contractions. Also we have covered the its adverse drug reactions as well, contraindications as well as the uses as well. So other class of the drugs which comes under ionotropic agents which are useful in the congestive heart failures are sympathomimetic drugs. Sympathomimetic drugs. So we are going to discuss about how sympathomimetic drugs like dopamine and dobutamine. So how dopamine and dobutamine is helpful in the CHF patients, how it increase the force of contraction of the ventricles and ultimately increase the cardiac output. So how it's going to do is, we are going to discuss that part. So how sympathomimetic drugs results in increase in the force of contraction of the ventricles. So first, sympathomimetic, as its name indicates, sympathomimetic are those drugs which mimics the sympathetic system. So if drugs mimics the sympathetic systems, it act on its receptors. So receptors for sympathetic system is alpha and beta receptors. So on the ventricles there are a beta 1 receptors, and beta 1 receptors belong to G protein coupled receptors. So in G protein coupled receptors, how it looks like and what is the configurations of G protein coupled receptors. So G protein coupled receptors, there is a extracellular domain. This is extracellular, outside the cells. This is a cell membrane, and this part is inside the cell, intracellular. Inside the cell we call intracellular, outside the cells we call extracellular. So this one is there is a extracellular domain in the G protein coupled receptors which is outside the cells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it's a 7 transmembrane,
right? So it's 7 times crossing the membrane. So we also called G protein coupled receptor 7 transmembrane receptor as well. So transmembrane receptors, and receptor is the proteins which is, and protein is obviously made up of amino acids. Amino acids contains two parts. One is NH2 and another one is carboxylic part, right? COH and carboxylic part and NH2. So there is an extracellular domain in the G protein coupled receptor, and as I said, G protein coupled receptors, GPCR, we also called it a 7 transmembrane receptors. The reason is because it's 7 times crossing the membrane. 7 transmembrane receptor. We also called it 7 transmembrane receptor. We also call this receptor as a serpentine receptor. So if someone is talking about serpentine. So serpentine means it looks like a snake. So if you see it carefully, it looks like a snake, right? So also due to this reason, we also call this receptor as serpentine receptors, 7 transmembrane receptors, because 7 times it crosses the cell membrane, and G protein coupled receptor because G protein is coupled inside the intracellular domain of the receptors. So in the intracellular parts, there is a G protein. So G protein is coupled, and due to coupling of the G proteins with the intracellular domain of the or domain of the receptors, we also called it a G protein coupled receptor, because G protein is coupling inside intracellular domain of the receptor. So this one is extracellular domain where ligand will bind. This is a ligand binding domain, and ligand in this case will be your sympathomimetic drugs. Ligand can be your dopamine, ligand can be your dobutamine. So it will attach to its extracellular domain, active site of the receptors, and going to activate these receptors. So this G protein is coupled with GTP, right? It's coupled with GTP, and this GTP is displaced by your GDP. So in inactive state, your G protein is coupled with GDP and GDP. It's coupled with GDP, and this GDP is displaced with the GTP when your ligand is bind in the extracellular domain. And what it going to activate in G, there is a different form: GS, GI, and GQ. There is a 3 isoform of the G protein. So it's going to stimulate GS form. When your sympathomimetic drug is going to act on extracellular domain of the receptors, it's going to activate the G protein, and G protein particularly it's going to activate GS form. GS is going to activate one enzyme, that enzyme is adenyl cyclase. Adenyl cyclase is an enzyme which going to do the breakdown of ATP. This enzyme is going to break down the ATP into CAMP, cyclic adenine monophosphate, CAMP. This is the increase in CAMP level. Increase in CAMP level is going to activate protein kinases, particularly protein kinases A. And these protein kinases A is going to phosphorylate your calcium channel. It's going to phosphorylate. Which channel? Calcium channels. So it's going to phosphorylate calcium channels. And phosphorylation of calcium channels, due to these phosphorylations, calcium channels will be open for a longer period of time. There is a more influx of calcium, so you know that how more concentration of calcium will result in ventricular contractions. So this is the mechanism by which sympathomimetic drug is increasing the ventricular contractions. Again, if I repeat, sympathomimetic drugs are those drugs, वो drugs हैं जो sympathetic system की तरह एक्शन करती हैं. तो हार्ट पे हमारे बीटा 1 रिसेप्टर हैं. बीटा 1 रिसेप्टर आपके बिलोंग करते हैं जीपीसीआर से. जीपीसीआर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. क्यों इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं? क्योंकि इसके इंट्रासेलुलर डोमेन में जी प्रोटीन कपल्ड है, राइट. सो जब भी आपका कोई लिगेंड लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, जैसे डोपामिन, डोब्यूटामिन्स, so these drugs will activate GS form. GS is stimulatory in nature. S stands for stimulatory. So what it going to stimulate? ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगी? एक इंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे. उस इंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज.
एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, सीएमपी। सीएमपी जितना बढ़ेगा वो क्या करेगा, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे तो आपका कैल्शियम चैनल जो है वो फॉस्फोराइलेट होगा। कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन होगी तो कैल्शियम चैनल मोर टाइम के लिए ओपन होगा। मोर टाइम के लिए ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर से अंदर ज़्यादा आएगा। अंदर कैल्शियम ज़्यादा आएगा तो मोर कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज कैल्शियम विल इंटरेक्ट विद ट्रोपोमाइसिन एंड डू द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शंस आपकी वेंट्रिकल की बढ़ेगी, राइट। सो दिस ड्रग इज as a ionotropic agent. So ionotropic are those agents which increase the force of contraction of the ventricle. So that is the mechanism. Another drug under ionotropic agent is phosphodiesterase inhibitors that we call PDE and particularly 3 PDE3 phosphodiesterase inhibitors. So another drugs under this is phosphodiesterase inhibitor. Phosphodiesterase inhibitors that we call PDE, particularly 3, third one. So phosphodiesterase inhibitors are drugs under this category is milrinone, amrinone. So these are the drugs which under this classification phosphodiesterase inhibitors. And these drugs are also ionotropic agents. And again ionotropic वो एजेंट है जो contractions of ventricle को बढ़ाते हैं. तो how phosphodiesterase inhibitor increase the force of contraction of ventricle? What is the mechanism? So mechanism is again mechanism of actions of phosphodiesterase inhibitor. How it increase the force of contraction of ventricle? तो कैसे increase करेंगे? Again if you see the process जो sympathetic system का है that act on GPCR. GPCR में they going to stimulate GS stimulate, then ATP will be degraded into CMP. CMP is going to activate protein kinases is going to phosphorylate your calcium channels phosphorylations of calcium channels will result in more influx of calcium ions, and more influx of calcium ions will result in increase in stroke volume, means increase in force of contraction of ventricle. Now here there is a enzymes which do the breakdown of CAMP. So the enzyme name is phosphodiesterase. So what this enzyme is doing, phosphodiesterase 3 is doing the breakdown of this and products will be formed, products will be formed. So what this phosphodiesterase 3 is doing, it doing the breakdown of CMP. So how these drugs are increasing the force of contraction of ventricle? These drugs are blocking these enzymes, amrinone, milrinone. What these drugs are doing? They are blocking this phosphodiesterase. By blocking the phosphodiesterase, CMP level will increase. CMP level बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन काइनेजेस और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे. प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे वो और ज़्यादा फॉस्फोराइलेट करेंगे कैल्शियम चैनल को. कैल्शियम चैनल की ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन होगी, वो ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होगा. ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होगा, ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम. ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा बाहर से अंदर तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ योर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स. तो अगेन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि आपके सीएमपी को तोड़ता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. सीएमपी को तोड़ता है, तो अगर सीएमपी टूटता जाएगा तो आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी. तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, सीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा. सीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो काइनेजेस फॉस्फोराइलेशन बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी. And there is another enzymes, you know, phosphodiesterase may be others. There is a PDE5 is also there, but PDE5 is not there in the heart. These are in the smooth muscles, particularly in the blood vessels, right? So these phosphodiesterase 5 inhibitors are also available in the market, but that are for erectile dysfunctions. And well-known drug is sildenafil. So it increases the vasodilations. Sildenafil is a phosphodiesterase 5 inhibitor and useful drug for the erectile dysfunctions, whereas phosphodiesterase 3 are useful for the
act as a ionotropic agents. So there is a different isoform of phosphodiesterase inhibitors, right? So this is about your ionotropic agents, how ionotropic agents increase the force of contractions of the ventricles. So what we have discussed so far, we have discussed about the drugs which are useful in the drugs for CHF, congestive heart failure. So what we have covered so far is, we have covered how angiotensin converting enzyme inhibitors are helpful, how angiotensin converting enzymes have a multimodal mechanism to reduce the to increase the cardiac output, right? So how ARB are helpful, angiotensin receptor blocker like sotartan, candesartan, captopril, enalapril, what are their adverse effects, what are their uses. Then how diuretics are useful. These are the first line of the drugs. If someone is suffering from congestive heart failure, we use first diuretics. Diuretics will decrease your preload as well as the afterload, right? Preload is the load on the ventricles creating by the blood, right, during the diastole. जब हार्ट आपका रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे जो ब्लड यहाँ पे है वेंट्रिकल्स में, वो जो लोड क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्री लोड, राइट? और आफ्टर लोड वो लोड है जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस केस में आपका लोड क्या पड़ रहा है हार्ट के ऊपर. तो डायरेटिक्स डिक्रीज प्रीलोड एज वेल एज आफ्टर लोड. हाउ इट विल डिक्रीज? इट विल डू द एक्सक्रीशंस ऑफ योर सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. सोडियम और वाटर ज़्यादा रिलीज होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका प्रीलोड एंड आफ्टर लोड दोनों कम होगा. अदरवाइज यू हैव ए आर्टियल डायलेटर्स. Arterial dilators are those drugs which will dilate the arteries. तो अगर dilates करोगे arteries को तो आपका लोड कौन सा कम होगा? There is a after load. After load कौन सा लोड है? Load on the heart during the systole, during the contraction of the ventricle. जो लोड पड़ रहा है हार्ट पे उसको हम आफ्टर लोड बोलते हैं. तो आफ्टर लोड कौन कम कर रहा है? ऐसी दवाइयाँ जो आर्टरीज को डायलेट करें, तो आपका आफ्टर लोड कम होगा. और जो दवाइयाँ वीनो डायलेटर्स जो वेन्स को डायलेट करें, वो क्या कम करेंगी? वो क्या कम करेंगी? प्रीलोड. क्योंकि प्रीलोड क्या है? प्रीलोड वो लोड है जो कि आपका ब्लड क्रिएट कर रहा है वेंट्रिकल पे जब हार्ट रिलैक्सिंग स्टेज में है. दैट इज योर प्रीलोड, राइट? तो प्रीलोड जब आपकी वेन्स डायलेट करेंगी तब आपका क्या होगा? प्रीलोड आपका कम हो जाएगा, राइट? सो दीज आर द ड्रग्स. व्हाट इफ these drugs are not helpful, you can digitalize the patients, you can use the ionotropic agents, digoxins, but you have to use very carefully. Many times we have discussed, because it's a drug with narrow therapeutic index, you have to use it carefully. It's a good drug, but it's not a drug of choice for the congestive heart failure due to its toxicity. Dobutamine, these are the sympathomimetic drugs, and what is their mechanism we have already covered, right? Then we have discussed about phosphodiesterase inhibitors, particularly phosphodiesterase 3 inhibitors. So these are the drugs which are useful in the congestive heart failure. Thank you.